लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला. We have 6 poets with us in one car. Everybody say hi. This is going to be आवाज गूंज रही है, पूरी कायनात थिरक रही है किसे लम्बे तूफान तो बाद, किसी लम्बे तूफान तो बाद अपने मन चुप ਹੁੰਦਿਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? आपने ध्यान से सुनी? आपने सुनी नहीं है. मैं गाड़ी चला रही थी. But what's happened is I feel a lot of people through school have been forced to memorize poetry, have been forced to learn it in only one particular manner. Also, we grew up learning, at least for me, I had to study a lot of the older classics. And I was always told this is what the author meant, this is the tools that were used, and this is what you write in your answer sheet. Now, I'm not the kind of person who likes that. And there are a lot of people who thought, I just have to suffer through it in school. Then I never want to see poetry again. So it's getting a bad rep from the start. So you can't expect then fully formed adults and humans to suddenly be gung-ho about poetry, because poetry has now become this thing that needs concentration, needs attention. I may or may not understand it. I'm scared to say the wrong thing. Madam, what is that? लोरियों से लेकर के चिढ़ाने के लिए बनने वाले जितने भी गाने हैं वो कविताएं ही तो हैं. बिल्कुल. सरल, जो सरल है वो सत्य. अब टिंडर पे भी ऐसे ही बात करते हो? टिंडर पे तो मैं हुई. Because it'll be amazing man if you speak on Tinder. Tinder पे किसी को बात नहीं करनी है. शोहरत बड़ा वो है ना कॉन्सेप्ट कि यार रातों रात उसको शोहरत मिल गई. यू अंडरस्टैंड द वर्ड शोहरत, राइट? तो मुझे लगता है कि उन लोगों के बारे में बात करते हैं यार जिनको रातों रात शोहरत मिल जाती है. कौन है ये लोग? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे. कि क्या होता है उन लोगों का जिनको मिलती हैं खुशियाँ किश्तों में. I know Asawari sometimes, so I know what she does for money on and off. Ooh, that sounds shady. That sounds very shady. I mean, she's a Not yet. Not yet. और ये जो भाव आपने एक्सप्रेस किए हैं, तो मैं पंजाब में रह के इस तरह के भाव के साथ कनेक्टेड नहीं था, और मुझे लगा कि मेरा सेल्फ एक्सपेंशन हुआ है इनको सुन के. So Look at you said Javed Akhtar and Gulzar. They are not just doing poetry. They are doing also multiple other things. Because even if you pretend to copy somebody else or you try to, it's not sustainable. If it's not who you are as a person, you will never be able to keep replicating. And then that becomes very obvious to everybody around you as well. Are you guys afraid of anything? Like as poets? Like I'm asking from a larger construct, like as a career move. But for example, when we write about maybe sexual abuse, we are empathetic towards the person who has gone through it, right? Yes. And then you can imagine what it might be like as a poet maybe, or as a person maybe, as an individual. Yes. शब्दों के पेट में कई राज छिपे हैं. शब्दों को सांस लेने के लिए, आंखें मलने के लिए. पता नहीं वो औरतें कौन थी, कहाँ से आई थी. मैले कपड़ों में सर पर पल्लू ओढ़े सुबह के शोर में गुम थी. Many things that their friends, they can see the world overtake them, and they're not speaking up. They kind of have. I'm sorry, I'm on a rant right now. Yeah, you are going on the right I track. feel like saying that. Concept of it, but I'm so glad. This is the experience I will carry for a long time actually. Imagine what I'm going through. All of you all in one car with me. I get to hear everything in one consolidated. It's like you're taking shots, poetry shots. Poetry shots. Hello and welcome to this amazing episode of Artistry Plus. We have 6 poets with us in one car. Everybody say hi. Hi. This is going to be an amazing drive. All of them are going to recite poetry. They're part of the Serendipity Arts Festival. And the name of their project is called Poets on the Move. Individually, they go on 6 different cab rides, but we lucky people have access to all 6 of them in one ride. They're going to make us fall in love with poetry itself. Everybody say yes. Yay. Inshallah. So this is going to be an amazing podcast.
We're going to start very soon. In 3, 2, 1, let's go. Go. Each of them is going to say like, comment, and subscribe in their own mother tongue. All right? ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸਾਨੂੰ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਿੱਚੇ ਕੁੱਟੇ ਬਾਜੀ। Like, comment, subscribe to Art History. ਹੈਲੋ लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये अभी गाना खत्म नहीं होने वाला है। We've been singing it since like forever. हाँ पता नहीं today only. So on that amazing start, my name is Vaibhav. And हेलो वैभव। हाय Hey Vaibhav. we are doing this podcast with 6 amazing poets. Tukral and Dagra have been generous enough to, actually to conceive this project. It's called Poets on the Move for the Serendipity Arts Festival. We have these amazing poets with us. I'm driving the car. We've got Attica left here. Yes. I've got the permission to have all 6 of them in the car, and they're going to make all of us fall in love with poetry itself. I have a question. My question is, when you're conceiving a poem, do you think about the other person, or are you just writing absolutely? Are you absolutely thinking about yourself in isolation? They stem from observations, from memories, from everyday things, as well as they are quite personal for me, and they also could be from the romantic to the political, anything in between. That's why they are quite intuitive, and they are just there. Does everybody write the same way? I don't know. I don't think so. It differs from Sometimes people. personal poetry is also about someone else's personal experience. Like you relate to that to some extent. You might not have gone through it yourself. But for example, when we write about maybe sexual abuse, we are empathetic towards the person who has gone through it, right? Yes. And then you can imagine what it might be like as a poet maybe, or as a person maybe, as an individual. Yes. So it's largely observation, but you go through it because as a poet, I think all of us are a little empathetic towards the society, towards things happening around and us, sensitivity towards it as well. sensitivity towards it. So But I don't like usually. Like I would say that there are such few sensitive people in the world, and poetry is not reaching people. Obviously everybody wants poems to reach a larger audience, but it's not reaching. What do you feel is the connect? Like disconnect? I have the answer, but I think if someone wants to take it, I would like. No, go for it. No, so I personally feel there is this thing between the listener and the poet that poetry is not my thing. Yeah. यार कविता वविता मुझे समझ नहीं आती. That guy. Right, but you will, by the end of this ride, you will understand that it's for everyone. Yes. Because people think there needs to be an understanding of the vocab, the craft is an elite's craft or something, Yes. which is mainly because it's not consumed in every household the way songs are consumed, or the way we let children paint or draw. We don't make them read poetry or have poetry books lying around or something. Why is that? Because it's also the inclination of the people towards poetry, and it doesn't happen a lot around. If you see, you can go to any evening, you can just step out and go for a musical night or something. But the curation of poetry evenings are very limited to certain cities. It's growing definitely, and I can already see like audiences turning up more and more. Stand-up comedians make fun of poets, right? Yeah. But poetry, I disagree. I kind of disagree with you because I feel poems and poetry has been part of folk theatre में देख लीजिएगा, या फिर even Kabir ki, all those dohas and everything. And also the fact that how do you describe the philosophy behind things? How do you describe everything, through the abstractions of words? Shabd, they have so many meanings. The silences are meanings. And it is, I think, and Natya Shastra mein dekho, Alankar, all those things. Like, it is very important, I feel.
It is a search for humanity, like in that. But Asawari, you can speak in such depth because maybe you are formally trained in the arts or something. When someone is not a literature student, like 99.9% of the population, for them to be a healthy recipient of the kind of nuance you're referring to, it's not possible. Man. People live normal daily lives. No, but in normal daily life also it's possible. Poems have been a part of daily life. हाँ, पेपर वाले से लेकर कच्चा बादाम, what is that? लोरियों से लेकर के चिढ़ाने के लिए बनने वाले जितने भी गाने हैं वो कविताएं ही तो हैं. बिल्कुल. We all start with poetry. I'm so sorry. Exactly, to it's interrupt you. okay. This idea that kids are not exposed, we all start with it. It's just also how much importance it is given in the context of the education system for starters. See, music or entertainment is always given to you as relaxation, as an outlet, as something, you know, Perfect. to aspire to. Even it's a very tangible thing. Okay, you do this, then you become an actor, then you get paid, or you do this. Whereas with poetry, it's always, there is of course the sense of this is not real, it's a hobby, it's not a skill. Yes. That's my problem. The idea that yes, anyone can write poetry. I will stand by that. Yeah. I'm not going to say good, bad, Yes. ugly. We're going to go there some other time. But this sense of we all start writing poetry, and somewhere down the line, I feel through education we have been scarred and been told by teachers that we don't understand poetry, that it's of a certain caliber, that it only uses language that's not accessible, whereas poetry comes from life, comes from observation of life, and gives you perspective of how to look at life differently through a different lens. It's a great way to have dialogue, to have debate, to educate people as well. It's a wonderful tool. But what's happened is I feel a lot of people through school have been forced to memorize poetry, have been forced to learn it in only one particular manner. Also, we grew up learning, at least for me, I had to study a lot of the older classics. And I was always told this is what the author meant, this is the tools that were used, and this is what you write in your answer sheet. Now, I'm not the kind of person who likes that. And there are a lot of people who thought, I just have to suffer through it in school. Then I never want to see poetry again. So it's getting a bad rep from the start. So you can't expect then fully formed adults and humans to suddenly be gung-ho about poetry, because poetry has now become this thing that needs concentration, needs attention. I may or may not understand it. I'm scared to say the wrong thing. Do you have an example of something very personal that you've written? And what is it an example of? Your poem. Yeah, all of them are personal. Can you recite one? Sure. So one of the things, I do write about lived experiences, and I have written a lot about love, and I've written about unrequited love a lot. I thought that being a poet meant writing from pain. I disagree with that now. But this poem is about how I love. Okay. It's called Ask. I would give you words, whole battalions of poetry marching through your veins to keep you afloat when your spirit is sinking. I'd build you a new spine out of our laughter, so that every time you are sad, I can just tickle your funny bone and watch you ascend even your darkest moments of doubt. I'd prop your shoulders up so high that they touch the ceiling, leaving no space for shadows or guilt. I would make lists, reasons why you should be happy, reasons why I love you, reasons why I believe in you, and just hope that some of these words sink in, seep under your skin and stay. So you can wear your armor on the inside, deflecting every unkind thought that dares to penetrate your brain. If I could, I would leave you notes, phrases from songs you love, quotes to remind you life can be cheesy. Send you snapshots of clear roads and soaring trees every single day, reminding you that freedom and possibility are just two sides of every coin. Do not hoard them for a rainy day. They are best enjoyed, spent. I would sit quietly,
watching you work, hold my breath while you give life to your imagination. Sneak compliments into all your pockets so you're never empty, never alone in the middle of the night. Ask time to stand still when you are weary so you're forced to rest, forced to breathe without that hindrance of, I don't have time. And I would do this conscientiously, my love. Even on the days when I'm selfish, I would find it in my heart to remember you, to remember that love is not always in the receiving. It's not always in the moments we get to witness. It is not always in a together we imagine. We were more fierce than the storms raging within me. And when we met, the trees would sing symphonies and the wind would wrap us up in the warmest embrace. You were adrenaline, leaving goosebumps on my skin. Whispers that when returned would turn to growls. We were passion that exceeded every dull moment of our past. We were something bigger than what we bargained for, yet not enough to keep us going. So if I could, I would give you exactly what you need in this very moment, if you were to ever just ask. Wow. You are a super empath. My God, you just defined my wife. That's so nice. It's amazing, man. It's everything a guy craves for, man. You are a woman's woman. It's amazing. I was listening to every line from the third line onwards. I thought I'll float away, but then I was like, my God, you remind me of all the women in my life. Thank you. That is mind blowing. Thank you. That is beautiful. Thank you. It's like I'm saying it's beautiful. I got it. Wow. Wow. Does anybody else write about their lovers? Does anybody want to admit that they have lovers? What's the right way to phrase it? Does everybody write from their heart? Write about love. Write about love. आप क्या करते हो जी? हाँ मैं भी लिखता हूँ लव सेल्फ लव सेल्फ लव तो सेल्फिश लव हो जाता है वेल सेड लव के आगे सेल्फ तो क्या लगाना है सेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग ना सेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग इट्स अ वेरी limitless thing so it's not limited to a body only so love is love तो कुछ नज़में हैं जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ लेकिन मेरा ख्याल तो ये था कि मैं कुछ आज बात करूँगा कुछ साउंड्स के बारे में rather than वर्ड्स क्योंकि शब्दों में तो उलझ भी जाता है दुनिया का बड़ा झमेला लेकिन जो शब्दों में छुपे वो उसके मायने हैं उसके जो अर्थ हैं उसके मायने जिस भाव को पैदा करते हैं और उन भावों से जो पैदा होने वाली एक रोशनी है एक वो जो नूर है वो इश्क है अल्टीमेटली एक साउंड है जो अगर सेम पोइट्री जो इन्होंने अभी एक पोम रिसाइट किया है उसका अगर वो नाद चेंज कर दें उसका एक वाइब्रेशन चेंज कर दें तो उसका अनुभव उसका एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाता है यही है जो लोगों को नहीं समझ समटाइम्स वर्ड्स आल्सो यू नो टेक्स यू somewhere that you don't want to actually only because of the sound the way you say things that's a sound so ultimately वो नाद जो है वो इश्क उस नाद में उस वाइब्रेशन में इश्क है कई बार हम कोई ऐसा शब्द जो सुनने में जिसका अर्थ इतना ज़्यादा मोहब्बत भरा नहीं भी है लेकिन हमारी टोनल जो एक साउंड जो है उसकी टोन जो है अगर वो हम्बल है तो उसमें भी एक एनर्जी डेवलप होती है दैट इज केयरिंग दैट इज नरिशिंग सो पोइट्री मेरे को लगता है पोइट्री गोज बियॉन्ड द वर्ड्स वो मायनों अगर मायने हमें नहीं आते हैं समझ पोइट्री के अगर किसी बच्चे को हम देखते हैं जिसको शब्दों का अभी अच्छे से बोलना भी नहीं आ रहा है वो भी नया मैं कुछ तो करता है लेकिन हम उसको सिखाते नहीं है कि तू ये शब्द बोलना सीख इनफैक्ट हम उसको उसकी तरह बोलने लग जाते हैं हम अपने शब्द छोड़ देते हैं कि अच्छा क्योंकि वी वांट अ कनेक्शन वी वांट अ लव वी वांट अ कम्युनिकेशन वी वांट अ कम्युनियन सो उसके लिए जो भी करना पड़े हम करते हैं एंड दैट्स द पोएट्री तो उसमें कौन सी कोई बड़ी एक बात है कि इसमें कोई गहरा कुछ अर्थ होना चाहिए इट्स पोएट्री इज अ वे टू कनेक्ट सो वो इस तरह की कला है पोएट्री
तो ये यूपीएससी का फाइनल 20 मार्क्स क्वेश्चन होना चाहिए. What is poetry? And this should be the 20 marks perfect answer. नहीं होता ऐसे perfect. That's the first thing poetry teaches you. Yes, sorry, please continue. तो अगर आप इजाजत हो तो मैं मोहब्बत को नाद की तरफ ले जाऊं, क्योंकि मैं आज तैयारी में हूँ फुल कि आज मेरे को कुछ मैं क्या है कि इस प्रोजेक्ट में आने से पहले कुछ एक सीरीज लिखी हिंदी में स्पेशली, कि लोगों को पता नहीं वो पंजाबी आएगी नहीं आएगी, कितने अर्थ बताता रहूंगा मैं हिंदी में लिख देता हूँ ना. तो लेकिन आज मुझे सुबह जितेन पाजी बोलते कि यार तू गा और तू मतलब अपने उसमें आ जा, जुबान जो जिस जुबान में तेरे को आती है. आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है, पूरी कायनात थिरक रही है. आवाज गूंज रही है, पूरी कायनात थिरक रही है. किसी लम्बे तूफान तो बाद, किसी लम्बे तूफान तो बाद अपने मन चुप ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁਖਮ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ. आवाज गूंज रही है, आवाज गूंज रही है. कोई ऊंची, कोई नीवी, कोई तीव्र, कोई मध्यम, कोई चहक रहा है, कोई गरज रहा है, कोई सिसक रहा है, कोई तड़फ रहा है. किसे दे रेंगण दी, रिड़कण दी, तिलकण दी, चाल दी, दौड़ दी, तैराक दी, उड़ान दी आवाज गूंज रही है. किसे सुने चुटकियां च, ताड़ियां च, सीटियां च, घराड़ियां च, छिक्कां च, खंगां च, हिचकियां च, उबासियां च. कोई गा रहा है, गुनगुना रहा है, कोई जोर नाल हस्या है, किसी ने हसी दबी है. किते तीर चलिया है, किते ढाल खड़की है, किसे हथौड़ी नाल सट मारी, किते कोई संगल टुटी है. पत्थर पहाड़ तो डिग्या है, पत्थर पहाड़ तो डिग्या है. किसे थां बुलबुले फुटे, किते कुछ मोती डिगे ने, किसे कुछ कागज फाड़े ने. किसे ने बांग दिती है, आवाज गूंज रही है. सुनिए सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए अंधे पावे राह, सुनिए हाथ होवे असगा. ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਘੰਟੀਆਂ, ਖੜਤਾਲਾਂ, ਵਾਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਨ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਟਕੀ ਫੋੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੁਣਿਆ ਅਣੂਆਂ 'ਚ, ਕਣੀਆਂ 'ਚ, ਭੌਰੇ 'ਚ,
पिंडे च, किसे फुसफुस च, किसे दग दग च, किसे टर टर च, किसे पी पी च, अनहद नाद अकाल दे अथाह सुरमंडला चो अदुत्ती तुना ब्रह्मंडी असंख आकार बन रहे ने, किसे सुनिए ओ सुनिए लागे सहज ध्यान सुनिए लागे सहज ध्यान कोई गावे को सुने हार नामा चितला कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए हो जी लोग जाने ए गीत है ए तो ब्रह्म विचार जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार कोई गावे को सुने हर नामा चितलाए कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत तुसी सुने स्टीयरिंग पे छोड़ के ताली बजाने को तैयार। शुक्रिया शुक्रिया Damn good. Man, what a guy. क्या कॉम्बिनेशन, शब्दों पे पकड़, आवाज में भी उतनी ही पकड़, ये तो मतलब बहुत That is super cool, man. सरल, जो सरल है वो सत्य है। अब टिंडर पे भी ऐसी बात करते हो? टिंडर पे तो मैं हुई Because you'll be amazing man if you speak on Tinder. टिंडर पे किसी को बात नहीं करनी है। Wrong platform. Can we have another poet? टिंडर पे कविता सीखेंगे तो क्या होगा? ममता 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 ममता। हेलो, मेरा नाम ममता है और मैं कोंकणी में और हिंदी में कविताएं लिखती हूँ। कुकड़ी में? हाँ, कुकड़ी बोलते हैं कोंकणी को। हाँ, कोंकणी सही शब्द। अच्छा, अरे वाह, शब्दों का खेल है। अरे वाह। तो शब्दों कुकड़ी का ही में सुनाओ खेल ना। है, इस वजह से Yeah. शब्दों पर ही आधारित एक कविता सुना देती हूँ। वाह। शब्द हमारे लिए, हम सबके लिए पहली इकाई है जहाँ से हमारी दुनिया शुरू होती है। शब्दों के पेट में, हाय हाय वाह। शब्दों के पेट में। शब्दों के पेट में कई राज छिपे हैं। शब्दों को सांस लेने के लिए, आंखें मलने के लिए, तुम्हारे सामने जम्हाई लेने के लिए, मुक्त होने के लिए तुम्हारे सामने समय लगता है बहुत। गुलमोहर की गंध में बारिश का गीलापन कैसे महकता है, और तब मैं कैसे हंसती हूँ आंखों से, बताने से क्या तुम समझ पाओगे? और सुबह सुबह बादलों में छिपा सूरज थोड़ा सा नम, कुछ कुछ सफेद, कुछ कुछ पीला कैसे फैलाता है, देख पाओगे तुम शब्दों में। अब के बारिश डरी डरी सी बरस रही है, पत्तियां भी हवा में डरते डरते ही झड़ रही है।
बदलाव का ये व्याकरण समझ पाओगे तुम? सच जैसा झूठ है वो, झूठ सच जैसा। पैरों तले मक्खियों की तरह मर रहे हैं कोई, गिरकर, टकराकर, कुचलकर। घिसे चप्पल, फटे घुटने, खून से सने पैर दिखेंगे तुम्हें एक रॉ पैरेलल सिनेमा की तरह। उसमें से कंटेंट ढूंढ रहा है वो कविता लिखने के लिए। कंटेंट मिलने का शैतानी सुख, राक्षसी सुकून, ओ भाई और बिल्कुल भी दर्द न होने का डिवाइन डिस्कम्फर्ट। ये स्वांग क्या तुम समझ पाओगे? कविता के पेट में कई राज छिपे हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कमाल। कंटेंट ढूंढने का शैतानी सुख, Went from राक्षसी बदलाव का सुख। व्याकरण यार, बदलाव का व्याकरण मतलब ये जो खेल शब्दों का, ओ भाई, बहुत सुंदर यार। हमें बड़ा मजा आ रहा है जो भी। आज मुझे लगता है कि हम ही मूव करते रहेंगे, Yes. बढ़ते रहेंगे। किसी और को नहीं शटल करना है। हाँ, हम ही One of the most funniest podcasts I've done. Podcast भी नहीं है, this is like a family trip. मैं लेके जाऊँ कारवार, Come on, let's go. नॉर्थ गोवा लेके जाता। Oh no. आइए दीपाली जी। दीपाली। थैंक यू। हेलो, मैं दीपाली, और मेरी पोएम्स जो हैं पर्सनल तो नहीं है, ना ही प्यार के ऊपर है। मेरे लिए प्यार आप सब लोग हो, सोसाइटी है। तो अभी जो पोएम आपको सुना रही हूँ उसका टाइटल है भीड़। भीड़। कई दिनों से भटक रहा हूँ राह भटकी भीड़ में। कई दिनों से भटक रहा हूँ राह भटकी भीड़ में, उम्मीद लिए कि कहीं तो मिलेगा खोया हुआ वो बचपन। भटक रहा हूँ यहाँ प्यार और अपनेपन की तलाश में। भटक रहा हूँ यहाँ प्यार और अपनेपन की तलाश में। कागज के उन पुराने टुकड़ों पर लिखे नाम की स्याही अब भी गीली है। कागज के उन पुराने टुकड़ों पर लिखे नाम की स्याही अब भी गीली है, लेकिन इस भीड़ में मैंने खुद को खो दिया अपने नाम को बचाते बचाते। यहाँ पेड़ हैं पर छाया नहीं, यहाँ चेहरे हैं पर मुस्कुराते नहीं, यहाँ जीवन है पर कोई जिंदा नहीं। यहाँ पेड़ हैं पर छाया नहीं, यहाँ चेहरे हैं पर मुस्कुराते नहीं, यहाँ जीवन है पर कोई जिंदा नहीं। सितारों से चमकते आसमान में ये भीड़ खुश तो है, लेकिन मुझे बचाना है उसमें से खोए हुए उस कमजोर सितारे को। खैर, इसने कभी सुना नहीं होगा खामोश अंधेरी रोती रात को, जो चीख चीख कर कह रही है, मुझे वापस ले जाओ उस समय में जहाँ प्यार है, छांव है, लाखों चेहरे हंसते हैं। मुझे वापस ले जाओ उस समय में जहाँ प्यार है, छांव है, लाखों चेहरे हंसते हैं। खतरा अब बढ़ने लगा है, खतरा इरादों का, नफरत का, दंगों का, सब खत्म होने का। पर मैं अब भी यही खड़ा हूँ इसी भीड़ में, धीरे धीरे ही सही परिवर्तन के इंतजार में। थैंक यू सो मच। क्या हो गया आपके लाइफ? I have a question for Yes, you. yes. Do you really believe that your poems are not personal? Maybe or may not be. Because how do you hold yourself back from your you know? Actually, I think यही एक आर्टिस्ट, कोई भी हो, पोएट हो, पेंटर हो, राइटर हो, उनके लिए यही एक इम्पोर्टेंट बात है कि वो Not here. वो रोक नहीं पाते हैं एक्सप्रेस करने के लिए।
चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो या अपने आसपास जो चीजें होती हैं। और आई थिंक आर्ट एक बहुत जरूरी चीज है जो हमारी सोसाइटी के लिए एक्सप्रेस करने के लिए, जिनसे जैसे कि हमारा जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि कुछ नहीं। कविता मर गई है या मर गई है ऐसा है नहीं, हम लोग उसको जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यस, तो इसी बात के ऊपर मैं एक और कविता सुना देती हूँ। प्लीज अरे इरशाद यस, तो आपकी पर्सनल इस सब्जेक्ट पे, सॉरी, इस सब्जेक्ट पे कि कविता Personal मत- है। नहीं, बिल्कुल नहीं डोंट वरी, वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। टाइटल लग रहा नया है टाइटल। वहाँ मैं नई कविता का शीर्षक है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। while we're on the move. खाली यू टर्न लेते जाते हैं। I'll name this podcast, मैं वहाँ हम नहीं वहाँ नहीं जाऊंगा। गए। हम वहाँ नहीं गए। हम वहाँ नहीं जा रहे। उस भीड़ से वापस आ गई हूँ, मैं वहाँ नहीं मैं जाऊँ। वहाँ नहीं जाऊंगी। वाह, हो गया। इस भीड़ का एक हिस्सा औरतें भी हैं। तो कोविड पैंडेमिक के दौरान की बात है, तो एक सीन को देखकर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसका टाइटल है औरतें। पता नहीं वो औरतें कौन थी, कहाँ से आई थी। पता नहीं वो औरतें कौन थी, कहाँ से आई थी। मैले कपड़ों में सर पर पल्लू ओढ़े सुबह के शोर में गुम थी। माथे की लाल बिंदी लगा जैसे कई कहानियां सुना रही हो। माथे की लाल बिंदी लगा जैसे कई कहानियां सुना रही हो। एक खोई हुई थी कहीं, शायद अपने अधूरे सपनों में। दूसरी अपनी बच्ची के सवार रही थी बाल। और मेरी नजर अचानक उस धुएं पर पड़ी। बीड़ी फूंक कर अपने को ठंड से बचा रही थी तीसरी औरत। उसकी मुस्कुराहट में लगा जैसे चाहती हैं उस धुएं में खुद धुआं हो जाना। दूसरी तरफ हाथ में चिप्स के पैकेट लिए खेल रहे थे अधनंगे बच्चे, और अपने में गुम उनकी माएं उस शोर में लिख रही थी अपनी खामोश कहानियां। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच। दिख रहा है ना वो भीड़ में, शी इज नोटिसिंग द भीड़, और वो ऑब्जर्वेशन वैसे ही जा रहा है, वहीं पर जा रहा है। मतलब मैं उधर से चलते हुए जा रही हूँ You और learn मैं भी from each देख रही other? हूँ। Yes. Yes. No, like instantaneously, or like, and would you, is there something like copying from another person's style or something? I think being inspired No, yeah, that even by the painters do that. perspective. But there must be times when you're craving to just copy that damn concept. But because then it's- you won't be able to do that because Yeah. everyone has a Unique. intrinsic style. You can at copy such a the. young age. No, I mean, स्कूल से होता है Like पोएट्री painting. I'm so glad. Tall. Yeah. I'm just I enjoying. mean, when painters, when artists, younger artists, they're still discovering themselves. Yes, For so- them to say that I've developed a style, because that would eventually come over years of practice, or like to find your voice, to find your Yes. your brand of voice, I would say, because it's a certain way you see the world. See, It's people not just have the way you a. write; it's the way you think. You actually, even the way you tie your shoelace would be exactly the way you. It's how you do it. You, the poet, would do it that way. So people have a very construed idea about copying or copying a style or a writing subject or something. मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो बंदा या बंदी कविता लिखना चाहती है, कवि बनना चाहता है कोई, तो कहीं से भी शुरू करे, वो अल्टीमेटली अपनी स्टाइल डिस्कवर कर लेगा। भले ही उसने शुरुआत ऐसे की हो कि किसी की इतनी पसंद आ गई कविता कि उसने उसका स्टाइल कॉपी कर लिया, लिखने में वो लिखावट में वो झलक दिख रही है सामने वाले की, पर उसको अगर आप वहीं पर वो कर दोगे ना, इंटिमिडेट करे ये तो उसकी है, तुम्हारी खुद की कोई स्टाइल नहीं। खुद की स्टाइल तो पनपती है और वो बहुत साल लगते हैं। बराबर। मतलब हम अभी भी शायद नहीं कह पाएंगे कि हमारी कोई स्टाइल डेवलप हो पाई है। आपने अभी कहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं ट्रू, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी हमारी स्टाइल डेवलप हो पाई है, बट मुझे लग रहा है कि कॉपी करने के साथ ना यंगस्टर्स जब लिखते हैं तो हम इसलिए कहते हैं कि हम फीडबैक राइटिंग स्टाइल पे नहीं देते,
हम जैसे कोई पूछते हैं कि कविता कैसी है, तो हम ये हमेशा उनको बोलते हैं कविता अच्छी और बुरी नहीं होती। फिर? कविता आपका एक्सप्रेस करने के लिए आपके ना शब्दों पे पकड़, आपके सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन, वो सब मैटर करता है, तो हम उस पर फीडबैक दे सकते हैं। ये कविता अच्छी नहीं है बोलकर हम नहीं छोड़ सकते। तो मुझे लगता है दैट इज माय पर्सनल टेक कि बढ़ावा तो सबको मिलना चाहिए। राइट, एक क्राफ्ट भी है जिसको आप जैसे कारपेंटर कार्व करता है, उस तरह का क्राफ्ट भी है, तो आप हर वक्त उस पे वो कार्विंग करते रहते हैं। कई ऐसे बड़े कवि रहे हैं जिन्होंने कविताएं लिखी हैं और फिर उसके कई सारे ड्राफ्ट्स उन्होंने बना के रखे हैं। अब ये बात तो बड़ी वैसे भी है ना कि अगर कोई बच्चा हंसता है और उसको देख के कोई हंस रहा है, वैसे तो नहीं बोलते ना कॉपी कर रहा था। हाँ। सबकी अपनी हंसी है। अब उसमें एक नीम का पेड़ है, उग रहा है, उस बीज में से एक नया नीम का पेड़ उगेगा, वो भी उगेगा, वो तो कॉपी थोड़ी कर रहे हो। नहीं, मगर हम किसी बात पे हंसते हैं, हम खुद से हंस नहीं देते। आपकी कविता है, मतलब आप जब इट्स लाइक यू आर ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड, इट्स योर लेंस, योर पर्सपेक्टिव, सो दैट कैन बी वेरी पर्सनल एज अपोज्ड टू लाफिंग। आई डोंट थिंक इट्स द सेम अनफ। हाँ, लेकिन पर्सनल में भी ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा, जैसे अब कहते हैं ना कि हाथ की लकीरें एक जैसी नहीं होती सबकी, तो वैसे देखने में तो लकीरें एक जैसी दिखती है ना। अगर आप किसी को बोलोगे कि हाथ की लकीरों की पेंटिंग बनाओ तो सिमिलर दिखेगी, सेम हो ना हो। तो जो डिफरेंस होता है सिमिलर और सेम में, तो मुझे लगता है कि Sorry. I also feel at this point in our existence, we cannot be thinking that we're having original thoughts. I feel that we do borrow, and it comes down to your morality of how and your ideals that come down to, yeah, you can copy. You can copy, I wouldn't say style, I would say more content than style. Because even if you pretend to copy somebody else or you try to, it's not sustainable. If it's not who you are as a person, you will never be able to keep replicating, and then that becomes very obvious to everybody around you as well. Secondly, there's something called sampling. Now that happens with hip hop, it happens with poetry. I know we do it in English poetry, or I have done it, where I've heard a poem and it has moved me, and there is a line in that poem. I take that line either as my title, put it in my poem, but always attribute it to the poet. So then I'm also talking about somebody else's work, but it is giving me a vantage point from which to see the world through a different lens. And this question is not a new question. It has been talked about since the 4th century BC, right from Plato and all the others. That is poetry imitation. Is it a copy? And even the question isn't original. Exactly. I wrote a poem after T.S. Eliot, so Love Song for J. Alfred Prufrock. I wrote a poem after unki kavita and responded to that. Of course, it was very different from the original one, and there was like one line which I borrowed and attributed to him. But swar ekdam badal jata hai. Asawari. Yeah, this one is very bad at putting other people under the bus. No, A for I think it's the person in the middle. Yeah. Okay. So All right. Asawari starts. Asawari, Okay. please introduce yourself and please let us know what do you want to introduce your project or your poet, or you just want to go for it? I'm Asawari, and I'm from Goa, and I am an artist, poet, performer, and I'll be reading one poem. So then after that we can talk perhaps. Sure. Yeah. February, winter's kiss, paper rose. Your lingering presence generates electricity. Stitch my heart to your heart. Stitch my heart to your heart. Lock me inside. My love for you blasts into a constellation far, far away. Our presence lingers there, forever there. My desire has turned into a tiger tonight, and it stares at me from afar. As if I were magic, I stare back at it. Nice. Wow. Yes.
So, Are we interpreting each other's works? I don't know. What do you want We to can just enjoy each other. We could just. I'll just read last one, a small one. Yeah, please. Okay. Savari. When I became Medusa. When I became Medusa on 1st October midnight, you called me a monster. That night I dreamt that I was Medusa and that you had become stone. A stone. Closing my eyes, I let the fish carry you to the shore. No doctor was available, but we begged the sculptor to carve your portrait so as to bring you back to life. Yeah. Thank you. Who are you writing this for? I'm writing this for myself only, yaar. I have a question for you. Are you guys afraid of anything? Like as poets? Like I'm asking from a larger construct. Like as a career move. I'm basically our podcast is watched by about to be artists who kind of like, my channel is called Artistry Plus. Most of the viewers write to us personally to say, can you feature this person, because we don't have an icon in this field, for example. Like, so I'm going to ask you, like, I personally know only Gulzar or Javed Akhtar as a famous poet in India, or maybe Ved Vyas. Okay, like I don't know who wrote the Bible specifically, but basically everything written in prose and Shakespeare. We don't have an icon since such a long time in poetry. Well, How do you inspire the younger generation if it's not mainstream? So my question is, do you have any fears and do you have any hope, or can you please suggest some kind of hope through you guys or through some upcoming artists so that people can at least go back and research the names of some poems or some poets in India specifically, because I care about this country to start with. So I'm just asking you, do you have any prompts that you would like to leave my viewers with? Sumana, Silguri, God, I can keep naming. I'll never stop naming. Actually, if you ask me, the names are so many. Arundhati Subramaniam, Perumal Murugan. It's never ending. It's going to be never ending. There is a book called The 60 Indian Poets. That's a good jumping off point, I think. Yes. That is a good collation of poetry. Fears, I fear nothing. I never look at poetry as a career. Why not? Because of the intention. I write because it keeps me sane and keeps me real. So tomorrow, even if I don't perform and don't earn money off it, I am still writing for me. So I'm already getting that validation and reward and joy from the very act of writing and observation, because it has changed how I see the world, how I live in the world, how I interact with the world. Do you want poetry to be not mainstream? Nothing like that. It's just not a thought that occurs to me. I don't go through the world wishing that I could, like You feel the same way she have does? more access. no, so I look at Yeah. poetry very much as something I will pursue forever as a career. But I'm like looking forward to making poetry a theatrical experience for everyone, rather than just a mic and a person standing up there and narrating a poetry. But इसमें fear का तो क्या है? हाँ. My question is, what can poetry become? Like, Oh, for ex- anything. 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 That's the biggest part. For example, in the art world, we have this construct that says anything can become art. Like there was a time when performances were not art. There was a time when photography was not art. There was a time when installation was not art. Now art has there are people who have come in and contributed their nuance and so had a software update within the field. Within poetry, you're taking names of poets who I personally, I'm sorry, have not heard. But I want to understand what poet, is it scalable? In India, unfortunately, poets have only one highway, which is Bollywood, or they'll write for films. Is there any other avenue? I mean, Yeah, so the thing is, me and Mamta, we have collaborated and we've done this performance as a theatrical piece called Response to Red. So, Lal Rang and the different kinds of emotions emotions. that emerge from the color. And हमारी जो कविताएं हैं वो आपस में हमने गूंथी. Literally. I'm not talking of. And no, and Feeling listen, like a business and Can we I also come back kind to of you? performed it. We also did like 2-3 runs, and people are connecting to the abstractions as well as the theatrical performativity of it. And वो जो नाटक piece है, it's moving. It's still going to move.
क्योंकि वो डिमांड आ रहा है उसके लिए. कविता लोगों तक पहुंच रही है, माध्यम है अपने पास. Okay, Vaibhav. Yes. I've been living as a full-time poet since 2016. I teach, I create curriculums, I work with teachers, I work with students, I perform, I curate. Yes. So I run a poetry residency for poets in Goa. So you're an entrepreneur. I do it all. For me, it's not just about. See, this is how I see it. Somebody opened a door for me and gave me an opportunity. I was only writing. Yes. Somebody opened a door and saw something in me and showed me about performance. Yes. Changed my life. For me, I believe in paying it forward. So, there are brilliant poets in this country. No one is teaching. No one is sharing. No one is spreading that knowledge. You agree that there is this problem? There is a lot of gatekeeping. So to me, it's about My question about fear comes from exactly Teaching. this point. Is that I'm sure poets, upcoming poets, are afraid. Like I have an instinct within the arts field that people are saying, and they don't want to rant about it. Like I know enough painters who are ready to come on my show and rant about as younger artists what their reality is currently. They don't pay GST, they don't pay income tax, they don't have life insurance, they can't sustain as painters, they can't do many things that their friends, they can see the world overtake them, and they're not speaking up. They kind of have. I'm sorry, I'm on a rant right now. But Yeah. You are going on the right I track. feel like saying that I feel maybe you're in a bubble, and I feel poets are not they are hiding under the garb of being personal. When no, yeah, but it's see, when you say I feel poets are, right, that's your perspective, and I think just with the 6 of us here, there are 6 different perspectives because it means different things to each of us. yes, So this is how I look at it. For me, the reward is in the living a life that is full of poetry. That's it. That's my biggest joy. I have no fears there because there were fears, and now I live this life that is just so fulfilling. And fear होता तो लिख कैसे पाते हम? You know, that's like there. That's breaking the fear. Look at you said Javed Akhtar and Gulzar. They are not just doing poetry. I know. They are doing also multiple other things. Honestly, Writing amazing films, and there is songs, and isn't so there a much. concept of Hasya Kavi Sammelan and that is Yes. that, I mean, there are so many forms, is what I'm saying. Yes, like I've of gone to course. Madhya Pradesh and I had seen a bunch of Hasya It's Kavi. the hub of Yeah. Hasya Kavi So Sammelan, and I've been attending these events. but I would rather come to the previous question. Yeah. I do have many fears associated with this career option. I might be saying wrong if I say that no, I love it. Because I keep looking for opportunities that can sustain me so that I can write poetry at peace. Because So you do another job. I am a script writer. So I am ad film director and a writer. Hold So on. yeah. Yeah. And I keep looking for opportunities that can keep me sustained. So for someone who has a income source, they can do poetry and pursue poetry for a longer period of time. But if you're just going with the poetry, you will have to if you keep looking for opportunities that are related strictly to poetry, and if you don't find it on a regular basis, it really shakes you up. But I feel like it makes you a hustler. Like I feel like when the pandemic happened, right, and everyone said, "Oh, now how do we work and how do we do things and how do you?" For me, it was I've done this for a majority of my life. Is hustle, is how to use poetry or I don't know, navigate this world of making money through poetry, and it became the most. I got a typewriter. I started typing out poems and sending out poetry care packages. So for me, when you say what can poetry be, what can you do, the possibilities are endless. You have to think of them. You have to. There is no set niche. There is no set mainstream. Like it's mainstream, there is no set path of what you need to go from point A to point B. And that's the only path to you. That is what I find amazing. I've written a book. I can then dramatize that book. Yeah. I can then. The possibilities are endless. It's for me to do that work and go there. Exactly. That's how I look at it. What is your relationship with money? It's a beautiful question. Yeah. For every artist, there should be an answer to this. What is your Asavari, your relationship? I know Asavari since some time, so I know what she does for money on and off. Ooh, that sounds shady. That sounds very shady. I mean, she's Not yet. associated with the arts and she's, Not yet. as I,
as a young Oh, she doesn't money. What do I do for money? I don't know. I don't get. It's not reflecting in the bank statement. What's that exactly? No, I want to understand. I'm asking everybody now who comes on the show, Yeah. what is the relationship with money? Because one serial artist had asked me this when I was in their podcast. Yeah. And I love that question because I was like, I haven't thought of this answer. And even the fears. And there are many things, like it's easy to answer the inspirational points, like what are you inspired by? Yeah. I could ask you, why are all poets so... Can I say something, Yes, brother? yes. Can we also turn around that subject, that why we are here? Yeah. Poems on the Move, what is that project, how we're feeling about this and how we are experiencing, and rather going into so much other questions. There are many questions that we can also Yes. talk about, but I think can we just also reflect on our experiences? Yes. Either Yeah. one. Yes. And then- And also, I need to narrate a poetry, so I will come. Yes. Yes, we. Yes, yes. That's what I was going to remind. Yeah. शोहरत बड़ा वो है ना कॉन्सेप्ट कि यार रातों रात उसको शोहरत मिल गई. यू अंडरस्टैंड द वर्ड शोहरत Yeah. राइट? तो मुझे लगता है कि उन लोगों के बारे में बात करते हैं यार जिनको रातों रात शोहरत मिल जाती है. कौन है ये लोग? मुझको भी तो लिफ्ट करा दो. कि क्या होता है उन लोगों का जिनको मिलती हैं खुशियां किश्तों में? क्या होता है उन लोगों का जिनको मिलती हैं खुशियां किश्तों में, जो प्यार ढूंढ ही लाते हैं रिश्ते रिश्ते रिश्तों में, अरे वाह. जो दौड़ में दौलत के नहीं पर खुलकर जीना चाहते हैं, जो रुक रुक कर चलने को भी आगे बढ़ना मानते हैं. धूप जब घिराती है और अंधेरा गहराता है, इनके अंतर मन का बल ढाल सा बन जाता है. जो लोगों की चार बातों को हंसकर जाने देते हैं, अड़ जाते हैं जब निश्चय पर, परिणाम को वक्त भी देते हैं. जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो बार बार दोहराते हैं कि इनका वक्त भी आएगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं चाहते हैं. क्या होता है उन लोगों का जिनके इंतजार का हिसाब नहीं, सीमा के भीतर पल पाए ऐसे छोटे उनके ख्वाब नहीं. जो हद से बाहर रहने में बेहद से होकर जाते हैं, बिगड़ी से बिगड़ी हालत में उम्मीद खोज ही लाते हैं. जो किस्मत की रेखाओं को लांघ कर दिखलाते हैं, जो नहीं नापते रस्तों को, जो मेहनत नहीं गिनाते हैं, जो दौड़ते हैं यो बेधड़क फिर उड़ने से लग जाते हैं, जो धीरे धीरे हर सवाल का खुद जवाब बन जाते हैं. वाह वाह, क्या बात. क्या होता है उन लोगों का? शायद ये वही लोग हैं जो रातों रात शोहरत पाते हैं. क्या बात. Dedicated You, to all. you really envy them? No, these are the people. Does it come from a place of envy or does it come up? No, from an admiration. आपने ध्यान से सुनी? आपने सुनी नहीं है. मैं गाड़ी चला रही कहते हैं कि रातों रात शोहरत मिल गई. हम कहते हैं कि रातों रात शोहरत मिल गई, पर वो रातों रात मिली शोहरत नहीं होती है. वो एक बहुत हम लंबा सिर्फ सफर वो एक होता है. मोमेंट देखते हैं उनके लाइफ. एग्जैक्टली हम वो देखते हैं जब वायरल हो जाते हैं, लगता है यार देखो एक पोएम से वायरल हो गया. हाँ. उसने वो 200 पोएम 250 पोएम जो लिखी वो Correct. तो हम नजर ही नहीं कर पाते. थोड़े लोग होते हैं जो 200 वीडियोस बनाते हैं लेकिन वो वायरल होते ही नहीं है. आप 300 बनाइए. किसकी बात है? क्योंकि हम लोग आर्ट के बारे में कंटेंट बनाते हैं, हम लोग वायरल कंटेंट बनाते ही नहीं है. तो उनके बारे में क्या आपकी सलाह है? शोहरत वायरलिटी से नहीं जुड़ी हुई है. सस्टेनेबल नहीं होती. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है कहीं ऊपर स्तर पर पहुंचने के बाद उसको बनाए रखना ज्यादा मुश्किल होता है rather than ऊपर उठते जाना. Absolutely. I feel the last 5 minutes we should discuss his point. Then we should talk about your experiences at Poems. Poems on the Move, curated by Tukral and Dagra. And I Salil Chaturvedi. Our poet from Shorao. Yeah, I would like you to. Do you have anything that you guys have experienced in this last few मुझे days? बहुत अमेजिंग लगा. मैं स्पेशली गोवा ये सेरेंडिपिटी में इस प्रोजेक्ट के लिए आया, पोम्स ऑन द मूव. तो कैसे पहले मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा था कि यार ये माहौल नहीं बनेगा कि एक किसी कोई पोएम को सुनना है, आपको एक थोड़ा सा इत्मीनान चाहिए, थोड़ा एक सुकून चाहिए, एक शांति चाहिए. गाड़ी में चलते फिरते कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट के लिए मैं ओपन था. सो द ओपननेस ब्रॉट मी हियर.
एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी अमेजिंग बिकॉज लोग जब आते हैं बैठते हैं और उनको जिस तरह से हम एज अ पोइट हमारे अंदर एक जो सलीका होगा, हमारे अंदर का एक जो भाव होगा, वो जो जिस मोहब्बत से या जिस सेंसिटिविटी के साथ या जिस अदब के साथ हम उनको वेलकम करेंगे, एकदम से वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस ऐसी है कि वो एक दूसरे के एनर्जी एक्सचेंज से होती है एक्टिवेट। तो ये एक्सपीरियंस मुझे इस कैब्स में, शटल्स में इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे आप इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में भी एक ऐसा मोमेंट जो इत्मीनान का है वो एक पोइट्री के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो एज अ पोइट। एंड आई थिंक ये तपस्या है, ये साधना भी है कि दैट वी आर शेयरिंग दैट थिंग इनसाइड अस विद द पर्सन जिसके अंदर भी वही सब है ना। वो जब हम शब्दों में आता है वो एनर्जी की तरह ट्रांसलेट होता है और आई थिंक वो थोड़ी देर बाद वो ट्रांसफॉर्म कर देता है उस एनवायरनमेंट को। एंड बहुत लोग अलग अलग तरीके की कुछ लाइनों के साथ, कुछ भावों के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उनके लिए वो बहुत वो रह जाता है उनको। वो कैब से उतरते हैं लेकिन कविता उनके साथ जाती है। बिल्कुल। तो ये क्यूरेट करना इस तरह से, ये भी एक बहुत कॉन्शियस क्यूरेशन ही बोलूंगा मैं इसको, कि जो होता है ना कि एक आग लगी या पूरी बिल्डिंग में पानी का एक तुपका भी कोई डाल रहा है, तो इट्स उस तरह का इसका बिंब है इस तरह के प्रोजेक्ट का। तो मुझे ये बहुत सुंदर लगा एंड आई एम थैंकफुल टू दिस होल व्हाट एवर इज हैपनिंग विद अस। जो भी ये क्रिएशन हमसे इस तरह से करवा रही है, किसी के थ्रू भी करवा रही है हमसे, तो ये बहुत सुंदर है। मतलब इनफैक्ट आज के दिन भी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, जो कि इच्छा थी वो भी पूरी हुई है, मुकम्मल हुई है। तो ये भी एक अच्छा है कि हम उसी एनर्जी को दूसरों से रिसीव कर रहे हैं। मैं अभी रोशेल से मिला, एमी मेरे फ्रेंड है चंडीगढ़ में, उन्होंने बताया, तो मैं उनको मिलते मेरे को लगा कि एमी से मिल रहा हूँ मैं। और फिर इनसे जब पहली बार मैंने गोवा, कोंकणी और ये जो भाव आपने एक्सप्रेस किए हैं, तो मैं पंजाब में रह के इस तरह के भाव के साथ कनेक्टेड नहीं था और मुझे लगा कि मेरा सेल्फ एक्सपेंशन हुआ है इनको सुन के। सो जो इन्होंने बात करी है, ये बड़ी इन्होंने एक मेन स्ट्रीम में किस तरह से एक चैलेंज है उसकी मेरे को एक तस्वीर दिखाई है और कैसे ये उसके थ्रू, उसके बीच में अपने आप को संभाल के मूव कर रहे हैं। सो दीज आर द स्पेसेस, है ना, जो हमें इंस्पायर भी करते हैं और हमारे अंदर का जो एक स्थिरता है उसको कायम रखने में मदद करते हैं। सो या ऑल दोस थिंग्स, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन शेयर। एवरीबॉडी आई थिंक उनके अपने अपने तजर्बे हैं इस 2 दिन की राइड्स में और अगले दिनों में भी होने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। It's a complete range of human contact, connection, what you give and what you get back. Sometimes you get more, sometimes you give more. It's a testament for me because I'm more introverted actually, so human contact tires me out. But for me to keep coming back, and I have to challenge myself then. So the first 2 days, the poems that I brought, then I brought out more poems. Then I started to become more intuitive. Okay, then I can do this, I can do that. I started to become more open. Yesterday there was a cab ride and there were just 4 guys in the cab, and with them I shared my most honest, and they had come with no expectation, and that kind of allowed me as well. They just said, no venue, we'll go to Nagali, we'll come back, let's do this, I want to hear all the poems. And I was like, let's go. That's my dream. My dream is that your mind is not on the destination, you're here for this journey. It's happening now. It's happening. People are especially coming for the poems. In the moment. And they're just transformed after the whole journey because they are tired and exhausted, or they're आने के बाद they do not expect that humanity and that sensitivity to be found, from a stranger. And when you get that, that's everything. पूरे दिन में एक 5-10 minute is like bliss. Yes. Across genders, age groups, nationalities, all of that doesn't matter once we get together. It doesn't matter, a lay person, anyone, regardless of that. So it's been very, very enriching as an experience. मजे आ रहे हैं। हाँ किया इसके लिए मतलब खुद को भी थैंक यू बोलूंगी कि मैंने हाँ किया, because it was so challenging to अच्छा okay poems of the whole concept of it, but I'm so glad this is the experience I will carry for a long time actually. Imagine what I'm going through. All of you all in one car with me,
I get to hear everything in one consolidated. It's like you're taking shots, poetry shots. Poetry shots. Poetry shots क्या on the आपके move. विचार अभी हम पहुंचने वाले हैं बदल गए हैं? This is like India's एकदम got गन latent. पॉइंट पे पूछ रही है यार. This is like India's got latent. No, I have to make a confession. My wife loves poetry and I Love her. listen to poetry. But the thing is that Indirectly. Nice choice of I don't know how to discover new artists. That's my drawback. My drawback is I don't know if I believe what I just heard is good or bad. I don't have that lens to say that this is good poetry and this is what I like. Actually, it's a problem with my own self-doubt. Ask yourself the question: did it I move was me? gonna say that. How did it make me feel? Yeah. That's it. Go by that. I must say something. Your poem moved me not because of the way I am as a person, because of the way you almost made a portrait of somebody I know very close to me. And so I might not have Asawari's poem move me, or I might not have his maybe because of the language barrier. But I just feel that I want to find my artists. Like you know how musicians are found on Spotify. I wish there was a Spotify for poems. Just here. And I always wish, that I always wish Indians have more avenues to put out expression. That's one of the reasons I started the channel, honestly. Nice. Okay.